Dear, dear media colleagues, thank you for joining us for this stakeout by Foreign Minister Bilawal Bhutto, who is joined by UN Resident Coordinator Julienne. As you have followed, we have just launched the UN Flash Appeal on the 2022 Pakistan Floods Response Plan. I need not go into details. We are facing a catastrophe that is colossal. Loss of life and devastation are huge and widespread. And this is another case of climate-induced disaster. Pakistan, the government, the entire nation, we are geared up facing the disaster with characteristic resilience and generosity. We have deployed all resources and capacities, but as is clear, the challenge is beyond these resources. It requires international solidarity and support, and that is why there is this call to action, and this UN Flash Appeal is part of that overall requirement. With those initial words, I would like to request the Foreign Minister to interact with you. Thank you so much. Today we launched along with the government of Pakistan and the United Nations, jointly launched the 2022 Pakistan Flood Response Plan, simultaneously in Islamabad and in Geneva. This plan has been launched in the backdrop of devastating monsoon rains, floods, landslides, that has impacted more than 33 million people in different parts of Pakistan. 72 districts across the country have been declared calamity hit. Over 1,100 people have lost their lives, including 350 children. More than 1,600 people have been injured. More than 1 million houses have been damaged. Over 700,000 livestock perished. 2 million acres of crops have been impacted, been severely damaged, and there's been severe damage to our communication infrastructure. The government of Pakistan is really carrying out rescue and relief operations nationwide, and we've also provided 35 billion rupees as earmarked for the Benazir Income Support Program to reach the affected families. The Benazir Income Support Program is targeting 4.6 million of the most vulnerable households in the affected areas across Pakistan, and recipients will be receiving 25,000 rupees in immediate cash relief. The government is also providing 1 million rupees in compensation to the next of kin to people who've lost their lives, 250,000 for the injured, and 250,000 for partially damaged houses, 500,000 rupees for totally destroyed houses. Under the flood relief plan, as an initial estimate, an appeal has been launched for $160 million to support life-saving response activities covering food security, assistance for agriculture and livestock, shelter and non-food items, nutrition programs, primary health services, protection, water and sanitation, women's health and education support, as well as shelter for displaced people. The FRP highlights the main humanitarian needs, the efforts and steps taken by the government of Pakistan to handle these challenges in collaboration with the United Nations and other partners, and sets out a well-coordinated and inclusive plan of action to respond to the needs of the affected people. I want to emphasize here that the scale and magnitude of the current floods is unprecedented, whereby the country received rainfall equivalent to 3 times the national 30-year average. This is a grave manifestation of climate change-induced disaster. Let me also note that the people of Pakistan have always shown exemplary resilience, generosity, and commitment in the wake of natural disasters. Same is the case in the current situation.
We see an overwhelming response from the Pakistani nation. People, civil society, and humanitarian organizations are mobilizing relief work in a huge way. I also pay tribute to our military and civil administration for their tireless efforts. However, the challenges exceeds the resources and capacities. Support of the international community is crucial in this regard. We would like our international partners to step forward and assist in the efforts of the Pakistani nation in overcoming the daunting challenges posed by an extraordinary situation. We appreciate the expression of solidarity and the emergency relief support being provided already by a number of our international partners, and we're also thankful to the United Nations for supporting the government-led efforts. Going forward, once the rescue and relief phase is over, because we're still in the rescue and relief phase of this ongoing natural calamity, we will need the support of our development partners and IFIs for reconstruction and rehabilitation. It is our shared responsibility to do utmost to assist the millions affected return back to normal lives, livelihoods in a sustainable manner. It is a long way ahead, but we are committed to achieving our goal. Thank you. Assalamu alaikum. Brothers and sisters, thank you for giving me the opportunity to say some words next to the Foreign Minister. I've been out there in the districts, in Sindh and Balochistan. I've seen people, whole villages on the move, hundreds of thousands of people displaced, taking everything they've got with them, throwing it into lorries and trucks and just piling it up by the road. And they need our help. Pakistanis today are giving them help. I've seen deputy commissioners, I've seen soldiers, policemen out there helping the religious communities, just like every person putting their hand in their pocket, giving a little. And that's a beautiful thing, and Pakistan is organising for that. However, this super flood is caused by what they say is climate change. But what is climate change? Climate change is the industrialization of the planet. It's leading to these sorts of weather. And therefore, the causes of this are international. It is only right and appropriate that the international community contributes. The other issue is that this surpasses the capacity of the country in some ways. Pakistan has a lot of ability. There's a lot of smart people. You've got industry, manufacturing. You have a strong state, but when a catastrophe of this size hits the country, it just goes over the capacity. I'll give you the example of tents. So your government has been reaching out to every tent manufacturer in Pakistan. They are producing full speed, but there's just not enough capacity in Pakistan to produce the tents that these millions of people need. So today is about sharing that message with the international community, reaching out to our brothers and sisters across the world, and say, this is the situation, we need your support, you owe us your support, this support is deserved, together we can set work for the people of Pakistan. And it is only the beginning. These floods will last. In many parts of the country it's beginning to start getting very cold in the coming months. In places like KPK and Balochistan, there's a whole set of other problems which will fall upon the people. We need to be organised and we need to work for them. And I'm grateful for the opportunity to serve the people of the government of Pakistan. So, Thank you. Then we have time for a couple of questions. I would appreciate short, concise questions, and please introduce yourself while you pose the question. Rajasthan. Thank you very much, sir. My first question is to the Honorable Foreign Minister of Pakistan. Obviously, the problem is huge and the tragedy is there. But we heard some policy perspective because crops are destroyed, no onions, no tomatoes, no potatoes. Is there a serious proposal to allow import from India of the edible that are urgently needed? And my question to the representative of the UN is here, that I really heard everything that was talked about today, and to me it appeared more focus remained on the climate change. On the other hand, we urgently need
intervention to rescue who are stranded. We urgently need to bring people who are stranded in the mountains. We need to urgent basis to heal the injured. And beside this, those who are killed, the graveyard needs to be dewatered. Literally, the water is still standing in the graveyard. So, are we not little bit defocused and $160 million for such a huge disaster? Is it justified that the world has committed today? Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था इस वक्त से आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस रिलीफ और रेस्क्यू पे जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो जो आप नेशन की बात कर रहे हो तो बात के सवाल आते हैं और उनके जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायजा लेंगे तब हम दे सकते हैं इस वक्त तक हुकूमत के बिल्कुल ये सोच नहीं है ना ही हमें ये फैसला लिया है भारत के हवाले से as far as rescue and relief is concerned, that is exactly the phase that we're still going. We are currently still rescuing. जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान rescue और relief बहुत limited हो सकते हैं. अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका, तो हम लोगों को rescue करने के लिए, relief पहुंचाने के लिए हम निकल सकते. जहाँ तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है सिर्फ ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं पूरा सुबह हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है 23 districts of Sindh 30 districts of बलूचिस्तान फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं अब पहाड़ी इलाका है और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आगे गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ और आपका जो रिहेबिलिटेट रेस्क्यू का फेज थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं जहाँ तक हम लो लाइन सूबे हैं वहाँ ड्रेन आउट करेंगे तो कहाँ करें हर तरफ पानी ही पानी है हम हमारा नेचुरल जो जियोग्राफी है खासतौर पे सूबा सिंध का हम सी लेवल पे हमारा सूबा है हमारा we're at sea level सो पानी एक दो दिन में भी नहीं महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का और मैं समझता हूँ कि मानसून का लफ्ज इसको जस्टिस नहीं करता है एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था आसमान से आया था हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं अभी तक गांव को घोटों को गांव को हम इवैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने आप का अपना तैयारी बदल रहे हैं कि ये जो आप देखते हैं जो पख्तूनख्वा की तरफ से अब पानी इंडस में नीचे आएगा उसका भी खतरा है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकेंगे लेकिन उसका भी एक खतरा है तो ये जो सवाल आता है कि किसी शहर से या किसी जगह से या किसी इलाका से पानी क्यों नहीं ड्रेन किया गया इट इज नॉट प्रैक्टिकल और इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज रेस्क्यू एंड रिलीफ assistance is to complement the national capacity is it enough? Well, sir, I think you're right. I think it's too small. But let's get it going. Let's make this, let's get that money out. Let's get the assistance out. Let's see the districts. And then, if the government feels that a revision is necessary, we, the United Nations, will work. From the right side, Mr. Ijaz, followed by Mr. Mateen. Ijaz, yes, that's done. Okay. Thank you, Mr. Paul, Minister Mateen. First thing is the money that is being pledged by the international community that may take time. Would you like to share with us are the present state of resources in a position to feed people who are shelterless, who need immediate food? And as Mr. DP coordinator said, the best issue. What in this prevailing situation when people need immediately help,
Do you think provincial authorities, federal authorities, local district workers, they have that much capacity to deal properly so that no one is left without help and without these things? And to UNDP coordinator, what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Paul, Minister of Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, बिल्कुल हमारा कैपेसिटी से चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो बाकी हुकूमत हो, चाहे हमारा NGOs हो या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हमें मदद कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी से बढ़कर डिमांड है इस वक्त 33 मिलियन पीपल। तो उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूँगा, श्रीलंका का पॉपुलेशन से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग मुतासिर। पार्टीशन के वक्त 33 मिलियन तक आप नजदीक तक नहीं पहुंचे। This just size and scale of the movement to these people. और इनके बेघर हो चुके हैं, इनके घर डूब चुके हैं, इनके गांव डूब चुके हैं। हमारे मुल्क में उतने टेंट्स नहीं है, ना ही हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम फौरन वो टेंट्स इतना जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। तो जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारे कैपेसिटी से बहुत ही ज्यादा खाना पहुँचाने की बहुत मुश्किल इम्तिहान है। इसलिए खास तौर पे जब बारिशें चल रही थी, सैलाब आ रहा था, तो कहीं पकाने का जगह नहीं मिल रहा, पका हुआ खाना देना पड़ रहा था, लेकिन पकाने का जगह नहीं। मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी तो जरूर कम होगा, लेकिन जो इस मौके पे हमेशा की तरह पूरा पाकिस्तान एक होके कंट्रीब्यूट कर गई, इससे हमारी कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। जो हमारे दोस्त ममालिक हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी इस वक्त तक the supply is not meeting the demand, और यही वजह है कि हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है ताकि हमारा कैपेसिटी में इजाफा हो। जहां तक कल का वफाकी हुकूमत का फैसले हैं, ये पुराने फैसले। जब वज़ीर आज़म साहब सुबह सिंध तशरीफ ले आए, तो हमारा इनिशियल डैमेज असेसमेंट के मुताबिक 15 अरब रुपया का ग्रांट अनाउंस किया गया। और ऑब्वियसली जैसे आप कह रही हैं, तो हमारा नुकसान के मुताबिक कैपेसिटी के मुताबिक ना काफी होगा, लेकिन जरूर मदद करेगा। इसी तरह बलूचिस्तान का ये फैसला पहले का फैसला, आई एम श्योर कि अभी जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, तो उसके मुताबिक जहाँ जहाँ भी बलूचिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, पंजाब हो, वहाँ जो भी हो सकता है वो बाकी हुकूमत करने के लिए तैयार होगा। On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to provide direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. वो सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पूरा पाकिस्तान के लिए है, सारे सूबे के लिए है, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से बंदोबस्त हो रहा। तो मेरा ख्याल है जबकि इम्तिहान बहुत मुश्किल इम्तिहान है हमारे लिए, सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस सिलसिला से का मुकाबला कर सकें। बस नहीं, Yes, sir. To working now. Last week I was in Las Vegas and in Balochistan. The UN's already been responding, working with PDMA for 2 weeks now, because we've seen the worst in Sindh now. It's not in Balochistan, weeks back. We've been working with them. The UN's already
received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. ये भी लाइव टेलीथन करेगा या नहीं इमरान खान की तरह? This appeal is important because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping it is going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. Thank you. Mr. Foreign Minister, Nayyar Ali here from News 1 TV. मेरा सवाल आपसे उसका एक हिस्से का जवाब तो आ चुका है और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो है वो यहाँ पर कहीं हमें उसका फुकदान नजर आ रहा है। सूबे जो हैं वो विफाक को ब्लेम करते नजर आते हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनको उस तरह से इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही। उसकी एक वजह ये है कि सियासी हुकूमतें अलग अलग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में जो है वो अलग तरीके से डीलिंग हो रही है, बलूचिस्तान में अलग हो रही है। तो क्या वजह है कि विफाकी हुकूमत एक पेज पर लाने में अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी है, सूबाई हुकूमतों को खास तौर पर, और कोऑर्डिनेशन का लेवल क्या है? जो सूबाई हुकूमतों का कैपेसिटी है इस हुकूमत का मुकाबला करता है। दुनिया भर में ऐसा कोई मेजर स्टेट नहीं होगा जो अकेला एक इंटरनेशनल कैलेमिटी का मुकाबला कर सके। आम सूरतों में तो सूबाई हुकूमतें अपने तहत यही मौका होता है कि वफाकी हुकूमत में उन सूबाई हुकूमत को मदद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये फैसले वेनेजुएला इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इमदाद पहुंचाने की बहुत टाइमली फैसले थे वफाकी हुकूमत की तरफ से, और हमारा नजर में awful जो विजुअल्स है वो सामने आए कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज के लिए, हेलीकॉप्टर के, और वही हेलीकॉप्टर खान साहब के जलसागाह को ट्राई करने में लगे हुए। मगर हम समझते थे कि ये सियासत करने का वक्त नहीं। जिनका दिलचस्पी था और है कि वो आवाम के दरमियान में रह के उनका मुश्किल में, उनके दर्द और दुख में शामिल होकर उनको मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं वो करें। जो नहीं और जलसा खेलना चाहते हैं वो जलसा पहले भी खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं। This should not distract us from our work. And our work, our first priority and the first priority of every Pakistani at this point in time are those affected by the devastating monsoon floods. We have one or two more questions. Unless followed by Mr. Faisal. Welcome back, Anis. Thank you so much, Honorable Minister. My question is to the Honorable UN Resident Coordinator. Three-part question, but very quick ones. Number one, how soon are we expecting this money to flow in? Or would it be just going under the political or bureaucratic jargons within the UN and it will take time? Number two, is this the first of many appeals to come, or is this it? And number three, will UN also be deploying some of its experts with regards to assistance not just to the government of Pakistan, but to the people of Pakistan on ground in order to help enhance the capacity of the government, as the Honorable Foreign Minister has just stated, that we have a capacity problem at this point of time. So will UN be deploying boots on ground or people on ground to help the people of Pakistan? Thank you. Well, certainly not boots on the ground, maybe trainers or slippers. So, well, actually, firstly, we are working. We did an allocation of $3 million for nutrition, water, livestock vaccination, which started 4 or 5 days ago, and I saw it myself in Lebanon. I've seen FAO supporting vaccination. I've seen UNICEF that's rehabilitating cold chains that were destroyed by the flooding. WHO has already given medical assistance. World Food Programming is doing distribution of food right now. UNHCR assisted hosting communities for refugees in the last 2 weeks. So it is happening, but the scale of the catastrophe is such that it's clearly not enough, right? So what are we doing? So
received about $12 million. The difficulty we've had in the last days is that the international community wasn't really aware of what was going on in Pakistan. And this is where you're so important. Right? If the media doesn't talk about the issues, if the media's not out there saying what's going on to the people of Pakistan, then it's not going to get picked up. Even in the national press, we were hardly talking about what was going on in the flooded villages of this country. So your role is absolutely, if you want to see this money and support faster, get out there, talk about what's going on, tell the stories of your people to the people of Pakistan, but also to the international community, and that will speed assistance. This is, we'll see. I work closely with the chairman NDMA, I work with the Economic Affairs Division, with the Ministry of Foreign Affairs, in discussion, and the Ministry of Planning, in discussion with your government. If we see that the assistance is going through well, if we see that more is needed, then there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes rehabilitation and reconstruction. We won't, that will be different parts of government that will lead that, and we will be supporting that. And it's going to be another massive challenge. In terms of experts, they've already arrived. Again, not in sufficient numbers. The Office of Coordination of Humanitarian Affairs have already sent in extra people in these last days, some of whom helped put together what you saw today. The appeal, we've had people come in to support the assessment. And we've got a huge amount of tents and flights that are coming into Karachi Airport right now. That is a huge challenge for a logistical challenge. So we have the World Food Programme, and we're sending in experts tomorrow that's going to help move those supplies that are so generously provided by countries around the world, move those supplies through Karachi and get them up into Sindh, into Balochistan, and Punjab, and wherever else it's needed. So we're working, we just need to speed up. Thank you. One question by Mr. Faisal Raza, followed by Mr. Chandi's here. Sir, yes. Faisal Raza Khan, I'm a senior correspondent from 92 News. Both the questions directed to you, Mr. Julienne. The first of all is that this flash appeal is already done, and my question is related to: is there any internal appeal done by you as a UN resident coordinator within the UN system, and how much you are geared up regarding the aid the UN has right now to respond to this large-scale disaster? And the second is that we all know that UNFCCC mechanism, Pakistan, under the German Watch report and lots of other reports, Pakistan is among the most vulnerable country among 10 of the top countries affected largely by the climate disasters, but contributing very little to the carbon emissions. So what about the $100 million of the climate justice program? Because Pakistan direly needs from the last many years, but unfortunately the countries who are very much vulnerable and doing a lot of progress regarding SDGs, not getting much help in that particular perspective. So thank you very much for that, sir. So the UN, we're a vessel for the assistance of member states. As UN agencies, we don't tax people. We don't generate our own revenues. So we receive money from member states, and we try to faithfully and rapidly at the direction of the countries in which we work to provide assistance. So we don't have money of our own. We keep small reserves that can be allocated, and we have some emergency mechanisms. Those emergency mechanisms have already been triggered for Pakistan. So we have the Central Emergency Response Fund, which did an initial allocation last week of $3 million. The agencies, funds and programs have small emergency allocation, small fundings of their own, and rotating funds, as they call it. Those have been triggered. So when I say to you, we've had about UN has invested about $7 million in grants in the last week.
those are those sorts of resources. But to go beyond that, that's why we need the member states. In terms of climate change, I would tend to agree with you. I think that Pakistan's voice is not being sufficiently heard on climate change, how it impacts this country, and therefore what needs to be done. Pakistan is a river system, in essence. It is the Indus Basin. The rivers that make up the Indus Basin. We need to be thinking about how climate change impacts that river system, which starts in Gilgit-Baltistan, Azerbaiján, Kashmir, goes all the way through your country, and how climate change is affecting that. Now, the UN is working with your government, with the Ministry of Climate Change, on Living Indus, an approach which will together look at these issues. And I think this is, not right now, because now we need to be focusing on saving lives. In the coming weeks and months, we need to be putting that forward at the General Assembly and COP27. Thank you. One question here. खैबर न्यूज़ से वज़ीर ख़ारजा साहब आपको सबसे पहले आपको यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर को मुबारकबाद इस बात की कि आपने 2022 पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस जो है जनेवा में और पाकिस्तान में कामयाबी से हमकिनार इसको किया है। बहुत सारे ममालिक से हमें आलमी बरादरी से इमदाद मिल चुकी है और पाकिस्तान के अपने भी वसाइल कुछ ऐसे हैं कि हम इस मामले को, ये आई हुई तूफान है, हमारा जो कुदरती आफात है, इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन पूछने का मकसद ये है कि ये तो सब कुछ हो जाएगा, आगे लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इमदाद आई हुई है, उसकी तकसीम जो है, क्योंकि बाद में बहुत सारे इदारे, किसी भी हुकूमत का ये ख्याल नहीं होता है कि उस पर कोई ब्लेम लगे या इसकी करप्शन सामने हमारे गले में पड़े। बाद में बहुत सारे इदारे फाफन पिटाट या और कोई भी इदारा वो अपनी रिपोर्टों में ये लिखते हैं कितना यूएन से आया था, वो खाया गया, जो कि जिम्मेदारान तक नहीं पहुंचा। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसका चेक एंड बैलेंस किस तरह होगा कि ये जो आदमी बरादरी की या पाकिस्तान की अपनी रिसोर्स से जो इमदाद होगी, रिहेबिलिटेशन होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, उनका खाने का, जिस तरह आपने फरमाया कि हमें खाना पका हुआ होता था लेकिन उनको पहुंचाने के लिए हमें कभी ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ते थे, कभी इसका क्या इतना ज्यादा पैसा मौजूद है और इस पैसे में जो हकदार है उनको पहुंचने तक मसला है। मसला हमारा इस वक्त ये है कि जो मुतासर अफराद है उनका तादाद इतना ज्यादा है कि हमारा टेंट्स कम पड़ रहे हैं, हमारा दवाइयाँ कम पड़ रहे हैं, हमारा खाने पीने की अशिया कम पड़ रहे हैं। तो there's a discrepancy in the perception. जो लोग समझते हैं कि इतना सारा सामान है तो ये लोग इनको क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि कोई जरूर दरमियान में चोरी कर रहा होगा। एक्चुअल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है जो मुतासर अफराद हैं उनका तादाद इतना ज्यादा है कि सामान कम पहुंचता, सामान कम है और तादाद इतना ज्यादा है। मसला हमारा ये है कि अगर हजारों लोगों को टेंट्स की जरूरत हो और आपके पास hundreds of tents होंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन हकीकत ये है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो हमारे जरूरियात है वो बहुत ज्यादा है, जो मुतासर लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, जो हमारे पास सामान है, जो हमारे पास अमदाद है वो कम है। और यही वजह है कि आज हमने ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है ताकि यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर स्टेट्स हमें इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकते हैं। जो हमें ट्रांसपेरेंसी में और करप्शन के लिए हम समझते हैं जो बेहतरीन तरीक़ेकार है कि इसको हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं और डायरेक्टली उन लोगों को बचा सकते हैं उनका हक जो हकदार है, वो आपका बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये ऐसा एक व्हीकल है जो जब से शुरू हुआ है आज तक पूरी दुनिया में इसको इंटरनेशनली सर्टिफाइड किया है कि बेहतरीन सोशल सेफ्टी नेट है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये पैसा उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। One last question from the last row. Maybe both of you can pose questions together, and that will be the end.
Thank you, spokesman. Good person. Bilawal sir, I have a question to you and to the UN coordinator here, to both of you. As we know, the Pakistani economy is already in a fragile situation, and this challenge is an added challenge to the Pakistani economy. Do you think that the government has the capacity to manage both the Pakistani economy and this challenge at the same time? Thank you. Can we have the other question also? Yeah. Mr. Foreign Minister, my name is Kamran Raja. I have a question regarding CPEC. The current flood situation of Pakistan will affect all the things. So what do you think that the CPEC projects going on will also disturb with the flood situation of Pakistan? Okay, so जहाँ तक आपका पहला सवाल है मीशत के बारे में, बिल्कुल बहुत ही बड़ा compounded challenge है पाकिस्तान. और अगर आप इस नजर से ये देखें कि पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया भर के जो challenges है उनका सामना कर रहे हैं, हमारे पूरी दुनिया में जो कोविड का पेंडेमिक है अब तक चल रहा है, लोग अभी तक बीमार हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन्स पे, ओवरऑल नेशन पे, दुनिया वो आपके सामने है. और फिर हमारा नेबरहुड में ही जो अफगानिस्तान का let's say evolving situation का अपने असरात हैं. उसके फौरन बाद जो यूक्रेन का जंग शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर की मीशत पे, महंगाई की सूरत में, वो भी आपके सामने है और वो भी इम्तिहान पाकिस्तान के अवाम उसका मुकाबला कर रहे थे. और उसके ऊपर ये जो कुदरती आफत आया है, ये जो सुपर फ्लड आया है, इसका तो जरूर असर आगे जाके हमारे मीशत पे भी होगा. जब पूरे की पूरी फसल तबाह हो चुके हैं, जनूबी पंजाब और सिंध के ज़राए ज़मीनें को बहुत ही नुकसान हुआ है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारा मीशत पे. और सबसे पहले हमारा ईमान हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला सिर्फ उतना ही बोझ आप पे डालते हैं जो आप उठा सकते हैं. तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब एक मिलके इन सारे के सारे मुश्किलात का ना सिर्फ मुकाबला करेंगे, हम एक बेहतर पाकिस्तान, एक ताकतवर पाकिस्तान बनाएंगे और हमारा सबसे गरीब मुतासर अफराद को सबसे पहले मदद करेंगे और उसके बाद बाकी लोगों को भी मदद करेंगे. मुश्किलात बहुत ही ज्यादा है, मगर इस सूरत हाल में जो हमारी यूनिटी गवर्नमेंट है, जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बल्कि इतने सारे सियासी जमातें हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम मिलकर अवाम की उम्मीदों के मुताबिक अपना काम करें. Second question is CPEC पे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो नुकसान हुआ है, CPEC और नॉन CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पे बलूचिस्तान, सिंध वगैरह में, पख्तूनख्वा में भी वो काफी टाइम लगेगा हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए. और मगर जो CPEC है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला. और हमारा फायदा ये होगा कि जब पिछली दफा या हमारा सुपर फ्लड्स आए थे तो उस वक्त ये सूरत हमारे पास नहीं था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, ये मार्केट एक्सेस हमारे पास नहीं था, जो आज मौजूद है. और आगे जाकर इंशाल्लाह ताला हम उन चीजों CPEC के कॉन्टेक्स्ट में जरूर उसका फायदा लेंगे. बिलावल, मेरा सवाल रह गया, एक दो सवाल ले लें बिलावल. माफी दे देना ना. CPEC में कह रहे हैं कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जिसमें CPEC भी शामिल है. पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है. हाँ, चलता रहेगा. हाँ, इंशाअल्लाह चलता रहेगा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसा है? ठीक है.